हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड मैन क्रिकेट शो विद मी अभिनव एंड मेरे साथ जो है रौनक केडिया जुड़ गए हैं। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी पिंक कलर की शर्ट पहन के पीछे धोनी साहब का बैकग्राउंड लगा के और धोनी की फोटो लगा के विद द वर्ल्ड कप जो कि खाली 3 दिन दूर है। रौनक, कैसा लग रहा है यार? मतलब बता मुझे। मतलब आई डोंट नो कि बॉम्बे में क्या कैसा एनवायरनमेंट है। मतलब तू देखता है कि आजू-बाजू, लाइक तू ट्रैवल करता है, ऑफिस जाता है तो तेरे को सड़क-वड़क पे दिखता है कुछ कि यार वर्ल्ड कप का फीवर आ गया है इंडिया में, लग रहा है कुछ? टू बी ऑनेस्ट हल्का-फुल्का है, लेकिन जितना अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्ल्ड कप के 5 दिन पहले जैसा माहौल रहेगा, 5 दिन भी नहीं, अब तो 3 दिन पहले जैसा माहौल रहेगा, वैसा ये कोई हाइप नहीं दिख रहा है। जस्ट बिकॉज़ इंडिया में अभी फेस्टिवल्स का ज़्यादा हाइप है, मतलब फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स हैं, तो इन बिटवीन दैट वर्ल्ड कप का हाइप थोड़ा-सा आई वुड से आई मीन कम है, बट नॉनदलेस हाइप तो वर्ल्ड कप का जैसे ही इंडिया के मैचेस शुरू होंगे, वापस से यस, हाइप अलग लेवल पे होगा, क्योंकि पहले 3 दिन इंडिया के मैचेस नहीं है। वी विल हैव टू बी ट्रू। वेरी वेरी अबाउट दैट। पहले 3 दिन इंडिया में वर्ल्ड कप और इंडिया के मैचेस नहीं है। दैट इज़ अ बिग थिंग, जो कि शायद एक रीज़न है कि इतना हाइप नहीं है पहले अभी फिलहाल। हो सकता है, या मेक सेंस। और बट या आई थिंक जैसे जैसे वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा तभी तो विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर ईच एंड एवरी गेम। और पहला गेम आई थिंक इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अहमदाबाद। लेट्स सी उधर कितना बड़ा क्राउड आता है मैच देखने में, एंड देन फ्रॉम देयर ऑन वी मूव ऑन। एंड इंडिया प्ले ऑस्ट्रेलिया ऑन संडे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन चेन्नई। सो उसके लिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, 6 दिन बचे हैं। बट अदर देन दैट आई थिंक द प्रिपरेशंस आर वेल ऑन कोर्स यार रौनक। बट प्रैक्टिस गेम्स में थोड़ा बारिश ने वो कर लिया ना यार। मतलब क्या कहते हैं, रेन वाज द राइट। अल्टीमेट विनर। एग्जैक्टली, मतलब वार्म अप मैचेस में जो अपन सोच रहे थे कि एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा प्लेयर है, कौन सा फॉर्म चल रहा है। खास तौर से इंडिया इंग्लैंड का बहुत लोग वेट कर रहे थे कि वो एक मैच जो है काफी इंटरेस्टिंग होगा। वर्ल्ड कप के लहजे से अगर वार्म अप मैच था, फिर भी उसके अलावा वर्ल्ड कप के लहजे से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो सकता था, जस्ट बिकॉज वो एक आइडिया देता हमको कि हमारी टीम किस लेवल पे फिलहाल खेल रही है, क्योंकि इंग्लैंड इज द रियल चैलेंज एज ऑफ नाउ फॉर मी। आई मीन बाकी लोग के लिए भी सेम ही होगा मोस्टली, बट फॉर मी, इफ आई हैव टू से कि इंडिया का बिगेस्ट चैलेंज इंडियन कंडीशंस में कौन है फिलहाल, तो आई वुड से डेफिनेटली आई मीन नंबर वन पे इंग्लैंड रहेंगे, बिकॉज they bat till what number 11, and they bowl with 7-8 bowlers at all the time. So that is a very big challenge. और जिस तरह से इंग्लैंड खेल रही है रिसेंटली में, आई मीन मतलब चाहे कोई भी पिच हो, नॉट जस्ट इंडियन पिचेस, चाहे कोई भी पिच हो, तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज। जो उनकी मेंटेलिटी है फिलहाल की विल गो हेल बॉन्कर्स फ्रॉम द बॉल वन टिल द लास्ट बॉल, टिल द 300th बॉल, वो एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है इंडिया के लिए खास तौर से, बट फॉर अदर कंट्रीज एज वेल। अगर मैं टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स बताऊं तो वो मैं स्ट्रीम के एंड में बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल रिवील नहीं करूंगा। ट्रू, मेक सेंस मेक सेंस। थोड़ा ऑडियंस को भी एकदम एंड तक पता रहना चाहिए ना कि यार हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बट आई थिंक आई एग्री विद योर पॉइंट, जो तूने इंग्लैंड का पॉइंट उठाया। नॉट जस्ट इंडिया, आई थिंक बीइंग द डिफेंडिंग चैंपियंस, हैज एनी टीम डिफेंडेड द वर्ल्ड कप अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? West Indies did it 75-79, and Australia did it in 2003 and 2007. Other than that, I don't remember any other team doing that. So I think England has a good chance to do that. टीम तो अच्छी लग रही है, बट आज हम वही करने आए हैं यार, हम टीम्स डिस्कस करने आए हैं। हम आज अगले 3 दिन हम स्ट्रीम करेंगे कंटिन्यूअसली। विल बी कमिंग अराउंड द सिमिलर टाइम एवरी नाइट टू टॉक अ फ्यू टीम्स, उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड्स, देयर पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एंड सम टॉकिंग पॉइंट्स एज वेल। स्टार्टिंग विद सो आज हम इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करने वाले हैं। हु आर माय कंटेंडर्स फॉर द टॉप फोर? मैं अभी से बता देता हूँ। आई थिंक दीज थ्री टीम्स आर इन माय टॉप फोर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, रौनक तो एंड में बताएगा, बट लेट्स स्टार्ट। कौन सी टीम से स्टार्ट करें रौनक? ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करें क्योंकि रिसेंटली हमने उन्हें काफी खेलते हुए देखा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करते हैं। दे आर द क्लियर, आई मीन वन ऑफ द फेवरेट्स, इफ आई वुड नॉट से द फेवरेट्स। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को कभी काउंट आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द एब्सोल्यूट बीस्ट्स व्हेन इट कम्स टू आईसीसी ट्रॉफीज। उनको हल्के में लेना इज बेवकूफ़ी, आई वुड से।
तो यहाँ पे उनकी स्क्वाड को देख लेते हैं, एंड देयर स्क्वाड इज प्रीटी मच आई वुड से ऑल वेल राउंडेड स्क्वाड, और जो थोड़े बहुत लूप होल्स थे दे हैव फिल्ड दैट substantially well. I mean, starting with Pat Cummins, of course, he's the captain. और जिस आई मीन ओडीआईज में पैट कमिंस का रुतबा काफी ऊपर चला जाता है। भले टी20s में उतना नहीं है, आई मीन टी20s में यू डोंट काउंट हिम मच ऑफ अ बॉलर, बट फिलहाल ओडीआईज में तो ही इज वेरी गुड पोटेंट बॉलर। अब इंडियन कंडीशंस में कितना वो कारगर रहेंगे, दैट इज वन क्वेश्चन जो फिलहाल हमको इस ओडीआई सीरीज में, हालांकि खेले भी नहीं उतना, 2 मैच खेले थे, उसमें भी उतना उनका दिखा नहीं कुछ खास, बट लेट्स सी हाउ इट गोज ऑन। शॉन अबाउट आई मीन वेरी गुड बैकअप, प्लेइंग 11 में तो शायद जगह ना मिले उनको, आई मीन स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में, दैट इज फॉर श्योर। एलेक्स केरी अगेन, ही इज अ वेरी गुड फिनिशर दैट ऑस्ट्रेलिया फाउंड, जो इंडिया खोज रही है या फिर बाकी कंट्रीज खोज रहे हैं। Alex Carey can be a very good finisher for them, and he has been doing that quite often. तो ये आई मीन 3-3 नाम लेते हैं, 3 नाम मैंने डिस्कस किए, 3 नाम तू ले ले, फिर वापस ले लेंगे हम। यार मेरा तो सबसे पहले तो मेरा तो टॉकिंग पॉइंट है, तूने कहा कि यार मेजर गैप्स फिल कर दिया। आई थिंक उन्होंने बहुत बड़ा गैप खोल दिया यार विद द इंक्लूजन ऑफ मानस लाबुशेन एंड एस्टन एगार को बाहर निकालना। आई हाँ, थिंक दैट वी विल टॉक। आई मीन एक 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 जो लूप होल्स उन्होंने क्रिएट किया है जानबूझ के या फिर लालच में आके, वो तो अपन बात करेंगे, हाँ, मतलब बट इसमें अपार्ट फ्रॉम लाइक 4 प्लेयर जो शायद स्टार्ट ना करें, द फर्स्ट गेम शॉन एबर्ट डेफिनिटली इज़ इन द लिस्ट। ट्रेविस हेड तो इंजर्ड है, तो ही इज़ नॉट प्लेइंग। Josh English won't play as well because the wicket-keeper batsman is Alex Carey. And fourth naam jo hai, I think it will be pretty much Marcus Stoinis in my opinion. Cameron Green will be a part of the squad alongside Glenn Maxwell. I think ये दो उनके होने वाले. But yeah, the squad looks decent. I was just worried about that spinning वाला जो मैंने तेरे को बात बताई कि Travis Head 3 मैच है नहीं. Pretty much they are playing with 14 players in the first 2-3 games, leading on Glenn Maxwell and Adam Zampa as their spinners, maybe Labuschagne who can bowl a bit, but this is a World Cup we are talking about. हम पार्ट टाइम बॉलर से आदि बॉलिंग नहीं करवाएंगे because you want to win those games. So what do you make of that decision कि यार एस्टन एगार को निकाल दिया and they like उन्होंने लाबुशेन के लिए जगह बनाई है, it is pretty clear. हाँ, अब उसके पीछे आई कैन थिंक ऑफ 2 रीज़न्स। वन इज़ लाबुशेन प्लेज़ स्पिन रियली वेल, और मिडल ऑर्डर में अपार्ट फ्रॉम स्टीवन स्मिथ कोई एक और शायद उनको बैटर चाहिए था। फॉर व्हाट रीज़न आई डोंट नो। आई मीन मेरे को फ़ील नहीं हुई कि उनका रिक्वायरमेंट था, बिकॉज़ स्टीवन स्मिथ बाहर थे तब उनका रिक्वायरमेंट समझ में आ रहा था। नाउ इफ स्टीवन स्मिथ इज़ कैरिंग एन इंजरी जो हमको पता नहीं है, एंड ही माइट नॉट प्ले ऑल द 9 और 11 गेम्स दे गो ऑन टू प्ले, that can be a substantial reason कि Marnus Labuschagne is a backup for Steven Smith as well as in the playing 11 maybe. I mean हो सकता है कि playing 11 में start ना करे वो, playing 11 में you might see Marcus Stoinis playing, but he is a backup for Steven Smith if Steven Smith is not in that primal condition to play all the 9 or 11 games, because India में conditions जो हैं काफी effective हो सकते हैं in on your body. That might be the only reason I can think of. And the second reason, of course, is Manas Labuschagne plays spin really well. That those two reasons I can think of is one is a backup for Smith who can anchor the innings, and other is he plays spin really well. So ये दोनों reason ही है जिसके वजह से maybe Manas Labuschagne has been kept in the squad, और recently उनका काफी अच्छा form रहा है, the way he have played those ODIs against South Africa and India as well. So I That's mean that is one of the reasons. दैट इज एग्जैक्टली माई पॉइंट। रिसेंसी फॉर्म के ऊपर लाबुशेन का सिलेक्शन हुआ है, नॉट हिज ओवरऑल ओडीआई करियर इज व्हाट आई फील। बिकॉज अगर ओवरऑल ओडीआई करियर देखा जाए जस्ट बिफोर द साउथ अफ्रीका सीरीज, आई थिंक ही हिमसेल्फ केम आउट एंड सेड आई अंडरस्टैंड द डिसीजन और क्यों मैं टीम से बाहर हूँ। सो आई थिंक he deserves this place. I don't know, there's still question marks in my opinion because साउथ अफ्रीका की भी जो टीम थी, yes, it's a batting track, साउथ अफ्रीका में हर मैच में we saw 400 300 ऐसे ऐसे रन बनते हुए देखे। सो आई जस्ट But फील Ashton Agar is not injured. If I'm not wrong, Ashton Agar is not yeah, he's not injured. injured, he's been dropped, it's pretty clear. And उन्होंने ट्रेविस हेड के लिए जगह, आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग मोर बॉलिंग फ्रॉम ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, लाबुशेन, कैमरन ग्रीन, ये लोग से ज्यादा बॉलिंग करवाने को शायद सोचते, मे बी इवन स्टीव स्मिथ। बट या दैट्स And अगेन ऑल कम्स one thing is very very यहाँ पे tricky that they are banking on
Glenn Maxwell very very highly. I mean, if he gets injured, जैसा कि उनका इंजरी का रहा है रिसेंटली, काफी इंजर्ड होते हैं. If he gets injured, I mean, if you are not being able to replace someone in the right time, तब आपको स्पिन का बहुत बड़ा झटका लगेगा, स्पेशली इन इंडियन कंडीशंस. इफ यू आर प्लेइंग इन चेन्नई और से पिचेस लाइक दोज वेयर इट स्पिन्स, तो या वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, बहुत बड़ा गैप आ जाएगा आपकी बॉलिंग में. एंड अभी ये ऑस्ट्रेलियन साइड वैसा 2003 या 2007 वाली ऑस्ट्रेलियन साइड नहीं है, विच कैन गो विथ फोर पेस अटैक स्टिल फील कि हाँ हम संभाल लेंगे. दैट इज नॉट द केस राइट नाउ. Yeah, I think जो तेरा point है ना, देख Mitchell Stark being in the side with that hat trick, yes, he looks in form. Pat Cummins, Josh Hazelwood, but I still feel in subcontinent conditions, you would prefer facing pacers and seamers over spinners, in my opinion. क्योंकि bat on the ball is what most of the batters like, and with extra pace with Labuschagne, sorry, with Mitchell Stark, Pat Cummins, Hazelwood, Cameron Green. I think adding that extra spinner would have been really helpful. I think going into the World Cup, I think as pitches die down, itna threat rahega nahi, for these fast bowlers. Exactly, as you saw in this series against ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, जो अभी रिसेंटली 3 मैच का सीरीज हुआ, उसमें भी आई मीन द पेसर्स वेयर टेकन अपार्ट बाय द इंडियन बैटर्स. जब भी स्पिनर्स आए दे वेयर थ्रेटनिंग, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो जाए, चाहे टू एन एक्सटेंट बीच में बॉलिंग कर रहे थे. आई एम जस्ट नॉट Mitchell Marsh, नॉट मिचेल मार्श, द अदर बॉलर हु spun a little. स्पेना लिटिल, और कौन था भाई ये लिस्ट में अपने टीम में? नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो स्पिन थोड़ा बहुत 2-3 ओवर डाला था. 2-3 ओवर? Anyways, apart from that, I mean, Maxwell, to be honest, was who took 3 wickets. और एक कोई बॉलर था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, who might not have taken wickets, but played a very crucial role in subduing पता the नहीं यार, runs इसमें in. तो लग नहीं रहा, मेरे को तो याद नहीं आ रहा, बिकॉज इसमें खाली लाबुशेन का ही नाम है और तो कोई लग नहीं रहा स्पिनर जो बॉलिंग करी है. Maybe I'll look for it, but meanwhile, let's continue with this. But yes, again that point, अगर Glenn Maxwell का कुछ हो जाता है, तो it will be very very tricky for them, to be honest. या आई कंप्लीटली एग्री, क्योंकि ऑलरेडी 14 प्लेयर के साथ खेल रहे हैं इन द फर्स्ट 2-3 वाइटल गेम्स. वन इज इंडिया, आई डोंट नो उनके बाकी के 2 फिक्चर्स किसके साथ है, बट इंडिया इज लाइक द मेजर टेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एज वेल. एंड Yeah. बट गुड थिंग इज दैट बैटिंग लुक्स इन फॉर्म. आई थिंक लाबुशेन अब आ गए टीम में, तो ही इज बीन देयर, आई थिंक ही इज बीन सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ द फॉर्म. डेविड वार्नर लुक्स गुड. आई थिंक इंडिया के सामने तो ऑब्वियसली रन बनाते हैं डेविड वार्नर. we've got Steve Smith, we've got Alex Carey. They bat deep as well. I think the one good thing about Australia is I think they bat till number 9, I believe, with Pat Cummins or a Mitchell Stark. So number 10, 11 usually Adam Zampa या Hazelwood होते हैं. अब तो Hazelwood भी रन बना लेते हैं, हमने देख लिया. So yeah, overall I think Australia is one of the favorites to qualify for top 4 मेरे हिसाब से. And once Travis Head अगर आ जाते हैं टीम में, then कौन बाहर जाएगा, that is the thing I want to look forward to. तेरे को क्या लगता है, किसको निकालेंगे वो टीम से बाहर? आई डोंट थिंक ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल, अभी फिलहाल जो अपन बोल रहे, विल इट बी मार्नस लाबुशन और मार्कस टॉइनिस, आई थिंक कि उन दोनों को बाहर निकाल के ट्रेविस हेड को लेके आएंगे. दे वोंट वांट टू हैम्पर टू मच विद देयर इनफॉर्म बैटर्स जो रीसेंट में काफी अच्छा करे, स्पेशली विद मिचेल मार्श. तो दैट कॉम्बिनेशन अगर चल गया, आई मीन इफ दैट क्लिक्ड इन द फर्स्ट कपल ऑफ मैचेस, तो उसके साथ चाहे चिरकानी ना करें. बट अगर नहीं चला तो द ओनली वायबल ऑप्शन इज दैट डेविड वार्नर आए और उनके साथ ओपन करे ट्रेविस हेड, जो काफी अच्छा कर रहे थे. दैट एंड नंबर 3 देन मिचेल मार्श, नंबर 4 स्टीवन स्मिथ एंड फॉलोइंग ऑन. उसके अलावा मार्नस लाबुशन एंड मार्कस टॉनिस गोज आउट. Yeah, I think fair enough, but मेरे हिसाब से yeah, I think they won't be opening with Green. I think March से open करवाएंगे first 3 games and then Travis Head नॉट comes in. ग्रीन, ट्रेविस हेड. नहीं नहीं, मैं फर्स्ट डेविड, 3 गेम की बात कर रहा हूँ. हाँ, फर्स्ट 3 गेम्स तो मिचेल मार्श ही ओपन करने वाले हैं. या देयर इज या नो या अदर ऑप्शन. हाँ, उसके बाद तो ट्रैविस हेड ही आएंगे and हमने देख लिया कि क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है ट्रैविस हेड एंड डेविड वार्नर एज एन ओपनिंग पेयर. I think they are not tested yet with the spin with the opening ball. Both are left-handers. I think pacers, they both of them like pace on the ball, and
इसलिए आई थिंक मे बी दे आर स्कोरिंग गुड कंसिस्टेंट रन्स. एंड साउथ अफ्रीका में व्हेन यू हैड जेरल कोटसे, रबाडा, एनगीडी, एनरिक नोकिया एज वेल, आई थिंक मार्को यानसन, आई थिंक दे रियली एंजॉयड ओपनिंग टुगेदर. एंड उसके अलावा आई डोंट नो यार, मेरे हिसाब से पता नहीं कौन ड्रॉप होगा. देन आई कैन सी मिचेल मार्श बीइंग इन द साइड, स्टीव स्मिथ बीइंग इन द साइड, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि 6 प्लेयर तो यही हो गए. Then Alex Carey at number 7, 8, 9, 10 में तीन फास्ट बॉलर, एंड देन द Zampa. I don't think then Labuschagne की जगह बनती है टीम में if Travis head is fit. वही मैं कह रहा हूँ, मार्नस लैबुशैन इज जस्ट अ बैकअप फॉर स्टीवन स्मिथ इन माय ओपिनियन. उनको सिर्फ क्योंकि एक तो इंडिया में 9-10 मैचेस खेलना लगातार ऑन अ ट्रॉट इन दिस साइकिल, और जहाँ पे काफ़ी कंडीशंस रहेंगी, कभी गर्मी रहेगी, कभी एक्सट्रीम हीट रहेगी. इन दोज सर्कमस्टांसेस आई फील ही इज जस्ट बिन ब्रॉट अप एज अ बैकअप. मतलब चाहे वो फिर डेविड वार्नर के लिए हो जाए, चाहे स्टीवन स्मिथ के लिए हो Yeah, जाए, द प्लेयर्स हु कैन एंकर अ लिटिल बिट. क्योंकि बाकी सब जो है बैम बूम वाले प्लेयर्स है, ट्रेविस हेड हो गए, मिचेल मार्श हो गए, ये लोग कैरी नहीं करेंगे इनिंग्स. कैरी करने वाले डेविड वार्नर एंड स्टीवन स्मिथ, एंड ही इज ओनली देयर फॉर बैकअप फॉर आइदर ऑफ देम. true, makes sense. I think yeah, वो जो एंकर वाला रोल है, I think Labuschagne is the most potent one in this side. और वो जो तूने flexibility की बात करी, that Labuschagne can bat at 3, 4, maybe 5 as well. So and maybe even open एक weird thought आएगा तो. But yeah, other than that, the squad looks really good for Australia. Do you think they'll qualify for top 4? इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन, वैसे तो ओपिनियन दे रहा हूँ तो ऑनेस्ट ही दूंगा, नेगेटिव क्यों दूंगा. दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग. बट एनीवेज, आई वुड से yes, I think so. I mean, Australia can, I mean, they are definitely one of my top fours in this World Cup. बाकी तीन टीम के नाम मैं बाद में बताऊंगा अगेन. बट ऑस्ट्रेलिया आर डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप फोर्स फॉर मी पर्सनली. Fair तेरा enough. क्या सीन है? और कोई, हाँ, मेरे तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट्स, आई थिंक आई एम ऑलवेज रेटिंग ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इवन दो उनकी टीम कितनी भी खराब हो, दूर से ऑन पेपर पे लगी कि यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, दे स्टिल मैनेज टू कम आउट ऑन टॉप एट द एंड ऑफ द डे. सो आई थिंक या ऑस्ट्रेलिया विल डेफिनेटली बी इन माय टॉप 4. और क्या इसमें इशू हो सकते हैं ये स्क्वाड में देख के, कि तेरे को क्या लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी इन स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, मिड ऑफ द टूर्नामेंट, लॉन्ग रन में, जो भी. द फॉर्म ऑफ द फास्ट बॉलर्स, दैट इज, लग रहा है कि मिचेल मिचेल स्टार्क काफी अच्छे फॉर्म में, एंड पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, लेकिन मैंने इन टैंडम इन तीनों को अच्छा करते हुए काफी टाइम से देखा नहीं है. या तो ये लोग लगातार खेले नहीं है, दैट इज वन ऑफ द बिग रीजंस. दूसरा, ये लोग का फॉर्म इन एंड ऑफ रहता है, ऑन एंड ऑफ रहता है. इवन मिचेल स्टार्क का वो कभी ऑफ रहते हैं, कभी ऑन रहते हैं. अब वर्ल्ड कप में आएंगे, हो सकता है ऑन रहे. बट द बिगर क्वेश्चन ओवर हियर इज, अगर इन तीनों में से फॉर्म खराब रहता है, तीनों में से एक या दो का फॉर्म खराब रहता है, then they have no backup. I mean, है उनके पास fast bowling all-rounders, but I mean, how much will you back Mitchell Marsh or Marcus Stoinis to fill their quota of overs? Is a question, is a doubt. अगर वो foreign conditions में रहते हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में, तो आई वुड हैव गिवन देम 100% चांसेस कि वो लोग शायद बैकअप बन जाए इनका. बट हम्म. इंडियन कंडीशंस में ऐसे बॉलर्स जो आपको आई मीन फास्ट बॉलिंग फॉर द सेक ऑफ फास्ट बॉलिंग कर पाएंगे, True. that is one big challenge for me. I mean, हम लोग सब बोल रहे हैं कि इनका स्पिन डिपार्टमेंट शायद एक्सप्लॉइट हो सकता है. आई बिलीव अ बिगर थ्रेट वुड बी देयर पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट. भले कितना भी ऑन पेपर सॉलिड लग रहा हो, that they have three world class, I mean, bowlers like Mitchell Stark, Pat Cummins, and Josh Hazelwood. But I feel, I mean, दो चार गेम में their fast bowling prospects would be found out, and वहां पे फिर वो थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं क्वालिफाई करने के लिए. क्वालिफाई शायद कर जाए, बिकॉज इट इज अ 9 टीम टूर्नामेंट, एंड 10 टीम टूर्नामेंट, एंड 9 मैचेस यू नीड टू प्ले. उसमें से 5 अगर आप जीत गए, 5 या 6 जीत गए, तो आप चले जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं. Yeah. But those 2-3 games might hamper their chances in the semi-finals or say finals. फेयर इनफ, फेयर इनफ, आई एग्री विद दैट पॉइंट, क्योंकि मेरा भी वही पॉइंट था कि अगर एज लॉन्ग एज लेटर इन द टूर्नामेंट जहाँ पे पिचेस विल ओपन अप, बिकम डेड टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक वो टाइम पे यू कैन एक्सपेक्ट थोड़ा जो थ्रेट है फास्ट बॉलर्स का वो चला जाए. आयुष का जो पॉइंट है, विल बी टचिंग देम व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन स्क्वाड. आयुष, स्टे ट्यून्ड, विल बी टॉकिंग अबाउट द इंडियन स्क्वाड रियली सून. बट या अदर देन दैट, what do you think? मेरे हिसाब से तो और कुछ, other than that they look really good यार on paper. The batting looks good, the bowling
looks decent as well, and that's the reason they are one of the contenders to qualify. Yeah, you think? Yes, absolutely. I mean, they have 7, 8 bowling options in their playing 11, and they have batting till almost 8, 9 in some games. They have all rounders, mix of all rounders. The only department which they lack maybe a bit is spin department as of now on paper. तो उसके Yeah. अलावा बाकी सारे बेसिस कवर्ड लग रहे हैं ऑन पेपर ऑन द स्क्वाड फ्रंट. Yes, it looks solid. It looks good. It will just depend upon how they play their first couple of matches. Yeah. पहले 2-3 मैच अच्छे चले गए उनके. आई मीन मे बी नॉट अगेंस्ट इंडिया होपफुली, बट अगर पहले 2-3 मैच अच्छे चले गए उनके तो दे विल बी अनस्टॉपेबल. लेकिन अगर पहले दो Yeah. तीन मैच खराब गए तो दे विल बी a bit hampered by this experiments that they have done till now. Yeah, I think I agree with that point because Australia is would prefer playing India at the start of the tournament rather than the later stages जहाँ पे there is like a qualification scenario or something. So I think good for Australia because वो recently भी India के सामने खेल के आए हैं. They know what the team looks like, what they can expect from all the players. So yeah, I think it's a good start for both the teams, to be honest. I think India would also consider Australia as one of the threats in the competition. But yeah, I think Yes, moving absolutely. forward, I think that's Australia for you. One of my contenders, one change in the squad so far. They had Ashton Agar before, उनको निकाल के they've got Marnus Labuschagne in the squad now. Spinner को निकाल के batting strong करी है या maybe backup strong करा है. That could, you can like view it both ways. But yeah, moving forward, next team. And before we move forward, one last point. As their Shagun we say, they have started to lose ODI just before the World Cup. आई Yeah. मीन जो उनका हमेशा का शगुन रहता है, वर्ल्ड कप से पहले कुछ मैच हार जाओ और वर्ल्ड कप जीत जाओ, वो चालू हो गया उनका. तो लेट्स बी वेरी 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 अबाउट दैट. Yeah, true. Moving forward, next team, one of my contenders once again. But yeah, let's talk about Team Pakistan. Shall we, Ronak? Yes, absolutely. I mean, in Asian conditions, they are not just in Asian conditions, but they have proven to be winners in all the conditions around the world, around the globe. But especially in Asian conditions, they are the new invincibles, we can say. I mean, भले एशिया कप में वो चले भले बाहर हो गए हो, but their strength is something which has been solid for a decent 2 years time now. I mean, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी उनके ऑलराउंडर्स, उनकी फील्डिंग स्ट्रेंथ जो काफी इम्प्रूव हुई है लास्ट कपल ऑफ इयर्स में. Everything on the first look, I would say, really good. The only missing point again would be maybe they will miss Nasim Shah. Otherwise, they have got a replacement in Hassan Ali. I mean, he is there. Mohammad Shami, I guess, पूरा साल नहीं खेलेंगे, but World Cup में आ जाते हैं. Yeah. That is what their squad is. But on upfront, I mean, पहले thoughts ये कि they are looking a very very solid side, which have all the capabilities to go all the way. I mean, till the finals or till semifinals at least. I mean, I would say. मेरे हिसाब से आई थिंक जो तू कह रहा है इनविंसिबल वाला पॉइंट, फॉर सम रीजन आई डोंट अग्री. आई थिंक यस, इन T20 आईज दे कुड बी इनविंसिबल्स. ओडीआई में आई स्टिल फील दे हैव अ बिट ऑफ लूप होल, जैसे कि हमने एशिया कप में देखा. व्हेन श्रीलंका बीट देम, देयर स्पिन डिपार्टमेंट इज व्हाट could hurt them in Shadab Khan and Mohammad Nawaz and Usama Mir now as well. Usama Mir, yes, he picks those wickets, but he also goes for runs. And जितना मैंने देखा, I think in the warm up game he was the pick of the bowlers जिन्होंने विकेट लिए थे. So but yeah, I'm not ruling Pakistan out at all, and it is pretty much their home conditions as well, you can say that. And yeah, Naseem Shah being out of the tournament could be a big miss. आयरनी इज कि हम जितने हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक की, हम उतना ही प्रेज कर रहे हैं पाकिस्तान की पेस अटैक को, बिकॉज आई थिंक द पॉइंट इज दीज गाइज नो द कंडीशंस मच बेटर देन overseas players. I think that is the reason they might miss Naseem Shah more. And with those reverse swing, Sorry to cut, but I believe Australia का pace squad, they might be more experienced, but Pakistan's pace attack is more lethal than them. yeah. In these circumstances at least. I mean, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पहले, I mean, if you see opening bowling and death bowling, who would you choose right now in the current scenario?
Sahin Shah Afridi and Haris Rauf, or Mitchell Stark and Pat Cummins? I'm I choosing mean, Pakistan. मेरे हिसाब से I think these the Pakistan's seam attack is probably the most lethal in the world right now. I think टॉप 3 में आई थिंक आई वुड रेट देम एज़ वेरी हाइली बिकॉज़ मैंने एशिया कप के टाइम पे बताया था कि दिस इज़ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक बिफोर द इंडिया गेम जहाँ पे उनके सीमर्स ने 10 विकेट लिए थे एंड ऑन सब कॉन्टिनेंट पिचेस अगेंस्ट अ बैटिंग लाइनअप लाइक इंडिया दैट्स अ बिग बिग अचीवमेंट। यस एब्सोल्युटली, इसलिए आई मीन पाकिस्तान साइड, जैसा तूने कहा कि स्पिन फ्रंट में शायद थोड़ा लैक कर जाए, अदरवाइज दे हैव अ वेरी वेरी सॉलिड स्क्वाड राइट नाउ। अब दूसरा बात आता है, देयर बैटिंग डिपेंड्स अ लॉट 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 ऑन बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, स्पेशली टू कैरी द इनिंग्स। या आई मीन बाकी लोग चिप इन करते हैं। आई मीन इमाम उल हक मे बी 4-5 इनिंग्स में एक इनिंग में काफ़ी अच्छा कर देंगे। सिमिलरली विथ आई मीन फ़खर ज़मान, सिमिलरली विथ मोहम्मद आई मीन जो भी उनके बाकी और बैटर्स हैं, सबका वो सीन है कि 4-5 मैच में इफ्तिकार अहमद 4-5 मैचेस में 1 मैच में अच्छा कर दिया, दैट इज़ व्हाट देयर कैपेबिलिटीज़ आर, एंड दे आर हाइली dependent on Babar Azam and मोहम्मद रिजवान टू डू गुड फॉर देम। उनके अराउंड 20-30 रन 40 रन बना देंगे, बट इफ यू से बाबर आजम और रिजवान को इस टीम से बाहर निकाल दे तो क्या बचता है? आई वुड से देयर बैटिंग इज देन वेरी वेरी डाउन स्लाइडेड या फ्रॉम देयर। आई एग्री और आई थिंक रिजवान ने भी रिसेंटली आके कहा था कि यार द केमिस्ट्री द कनेक्शन बिटवीन बाबर एंड रिजवान इज मच बेटर। आई थिंक ही फील्स मोर कनेक्ट विद बाबर रादर देन एनी अदर बैट्समैन। और जैसे अक्षय का कमेंट है यहाँ पे दैट फकर जमान आई थिंक या ही इज ड्यू बिग रन्स यार। I've seen पाकिस्तान ट्राई टू फिट फकर जमान इन द टीम मतलब डिफरेंट पोजीशन में बैटिंग करवा के देखना कि वहां पे रन्स बन पाए बट आई थिंक ही इज नॉट इन गुड फॉर्म एट दिस मोमेंट सो yeah I think he should be up for some runs and what better conditions than playing in India if you're a Pakistani. Other than that, yeah, they look decent once again. I mean, we are only discussing the teams who are contenders at this moment. I think Pakistan is one of the contenders to go very far in the tournament. I won't say that they'll win it. They can win it, but I'm not saying they should win it with this squad. So I think that is the difference. मेरे हिसाब से तो fast bowling, yes. Mohammad Wasim Jr. I think I'm a big fan of his reverse swing. I think I really like the way he bowls with the old ball in between, in the middle overs as well as at the dead. So I think Pakistan will be happy to have him. Haris Rauf will play. Shaheen Afridi will play. I just don't know वो लोग सीम अटैक के साथ क्या चेंज करेंगे इंस्टेड ऑफ नसीम शाह विल दे गो फॉर अ हसन अली हु कैन बैट और मे बी अ मोहम्मद वसीम जूनियर हु कैन गेट यू दोस 10 ओवर्स सो मेरे हिसाब से आई थिंक मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ जाएंगे वो बिकॉज पाकिस्तान स्ट्रेंथ हैज ऑलवेज बीन देयर फास्ट बॉलिंग एंड they want to get those wickets early and मेरे हिसाब से yeah they could go for मोहम्मद वसीम तुझे क्या बट लगता है? हिस्ट्री सेज दैट दे वुड गो विद हसन अली। आई मीन जिस तरह से वो, I mean, the first person that they are dependent upon in their fast bowling prospects, जब आपके प्रॉपर फास्ट बॉलर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, चाहे वो मतलब पिछले 5-6 साल से चल रहे हो, the first person who comes in the squad directly is Hassan Ali. For Yeah. some reason that guy is there, that guy suddenly becomes their go to bowler. I mean, इस वर्ल्ड कप में आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर पहले 1-2 मैच के बाद हसन अली टेक्स द चार्ज ऑफ पाकिस्तान बॉलिंग अटैक, एंड मे बी ही इज द फ्रंट लाइन बॉलर। आई वुड नॉट बी सरप्राइज बिकॉज उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में भी सेम किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2015 वर्ल्ड कप में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज देयर टू see the Pakistani attack. So Yeah. Hassan Ali might be the dark horse in this Pakistani bowling lineup. मे बी यू कैन से आई थिंक हाँ ये भी एक अच्छा टॉपिक है टू डिस्कस कि हर टीम में से हु कुड बी दैट काइंड ऑफ अननोन कमोडिटी जो कि बाहर आके दे काइंड ऑफ विन द गेम्स फॉर द टीम एंड या हसन अली कुड फिट इन दैट ब्रैकेट other than that South Shakil yeah big fan of South Shakil as well I think श्रीलंका में जो इनिंग्स खेली थी दैट डबल 100 आई थिंक उसके बाद तो मैं बहुत बड़ा फैन हो गया था साउथ शकील का इफ्तिकार ahmed should be playing in the middle order मोहम्मद नवाज so what do you think they'll do with the bowling attack? Because there is Mohammad Nawaz, there is Usama Mir, there's Shadab Khan, who's the vice captain, of course, Shadab Khan, and Shadab Khan will play. Do you think they would want to go with the two leg spinners or with Mohammad Nawaz and rest Usama Mir? Because Usama Mir looked really good in the warm up game.
Yes, I mean, Osama Mir can be that guy who can be, slotted in place of Mohammad Nawaz for sure. But Mohammad Nawaz फिर वो बैटिंग का prospects जो देते हैं वो शायद मिस हो जाए. Now Pakistan have a few chances to take. I mean, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. अब कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो देखने वाली बात होगी. Whether they go with Usama Mir and Hassan Ali, or they go with Mohammad Nawaz and Mohammad Wasim Jr. वो दोनों का कॉम्बिनेशन वो बना सकते हैं, उन दोनों में से किसी एक का कॉम्बिनेशन. एंड या दे तो माइट कह रहा है नॉट कि हैम्पर बैटिंग ऑन द उनकी बैटिंग pretty एज़ much वेल. सेम रहेगी फिर। हाँ, तो उन ओके। दोनों में से किसी का कॉम्बिनेशन वो बना सकते हैं. एंड व्हिच कॉम्बिनेशन दे विल स्टार्ट विथ इज़ अ बिट इंटरेस्टिंग. मेरे हिसाब से आई थिंक दे माइट स्टार्ट विथ मोहम्मद वसीम जूनियर एंड मोहम्मद नवाज़, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़. Yeah, I think they'll play Mohammad Wasim over Hassan Ali in the first few games, or again depending on the pitch condition because Shadab Khan will play. So इसमें 11 क्या बनेगी? Shadab Khan, Babar Azam are going to play. They'll open with Fakhar Zaman, Imam Ulaq, Mohammad Nawaz at number 5. No, sorry, number 4. Then we have either Saud Shakil or Iftikhar at number 6. Then जो पांच बचती है जगह उसमें से तीन तो फास्ट बॉलर्स हैं. So बाकी के दो जो है उसमें will they play Hassan Ali as an extra seamer or maybe an extra spinner in Mohammad Nawaz and Usama Mir. मेरे को लग रहा है they might you know go for with that Hassan Ali वाला aspect instead of playing an extra spinner because हमने देखा था कि in the Asia Cup itself when Mohammad Nawaz and Shadab Khan came on to bowl, India got well settled against them. उतनी threat नहीं वो हो रही थी but वही जगह पे अगर एक हसन अली होते as a changing bowler or maybe like a Fahim Ashraf, maybe the things would have been different. I think that could be the reason that they might play, a fourth extra seamer as well. Yes, absolutely. अब इसमें अगर if we take out 4 names instead of putting of the 11, I mean, for sure either of the two, जैसा मैंने पहले कहा, either they will go with Mohammad Wasim Jr. and Mohammad Nawaz, or Hassan Ali and Usama Mir. अब उस Yeah. दोनों में से किसी किसी एक का कॉम्बिनेशन में जो भी खेलेंगे तो इन चारों में से दो नाम तो बाहर जाएंगे. दैट इज देयर. Third, maybe Abdullah Shafiq might sit out, Yeah. I and think he'll the sit out. fourth Yeah. Abdullah Shafiq, I think he'll be on the bench. Yeah. and the fourth name can be Ali Aga. Salman Ali Aga. Yeah. He can sit out. Fair, Otherwise, all the others will play. fair enough. Fair enough. Yeah. That's Pakistan. क्या लग रहा है तेरी contender है top 4 के लिए पाकिस्तान? Uh, I have two contenders for the number four spot, and one of them. I mean, if I say top five, then one of them is Pakistan for sure. But I have two names in my mind, and the other name is for sure again a mix of two names, New Zealand and South Africa. तुम्हारे But तो as 6 of तक now, पहुंची है. I would say South Africa and Pakistan are my those two dark horses. So who can go all the way? Not all the way, but in the semifinals for sure. Those two teams out of I mean, say two options, one place. यार पता नहीं यार. आई एम नाउ आई एम वेरी अनश्योर आफ्टर लुकिंग एट न्यूजीलैंड द वे दे हैव प्लेड इन द वार्म अप गेम्स. पता है क्योंकि राइट नाउ पाकिस्तान वर लाइक माय श्योर शॉट कंटेंडर्स फॉर सम रीजन. नाउ अगेन it is between them and New Zealand for that fourth spot maybe. And Australia, I don't want to rule Australia out only because चार spot में एक तो मिल सकता है Australia को is what I feel. And England being the defending champions, the way they have played ODI cricket, I think they should qualify. But yeah, I think that is my fight is between Pakistan and New Zealand right now for the fourth spot. Pretty हाँ, much वही like मतलब मेरा मेरा भी वही है. मतलब पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. यू सेड पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, आई से पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका. yeah, दैट इज द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज टॉप थ्री तो मोस्ट लाइकली सबका सेम ही रहेगा. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड. दिस थ्री yeah. टीम्स फॉर श्योर. आई मीन, इफ समवन इज brave enough to rule any of these three out, then good luck to them. But Maybe I think some वो have done it. I think one of the panelists, Star Sports के commentary panel में उनका prediction में किसी ने तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं रखा है in the top four. I don't remember the name, but one of them was there. I remember from makes sense if one country which can be a very good dark horse in my opinion in सब के अलावा is Sri Lanka. I mean, we cannot count them out. I mean, यार जिस तरह से उन्होंने ODIs खेला है recent past में last 2 years,
They have literally won everywhere and against everyone. इट इज नॉट दैट कि वो अपने अपने कंडीशन में सिर्फ जीते हैं। लास्ट आई मीन आई वुड से 15-16 ओडीआईज जो उन्होंने वर्ल्ड ओवर में खेले हैं, उसमें से 13 या 14 जीते उन्होंने। तो दैट इज अ यार वो वेरी ह्यूज। दे लॉस्ट टू अ वेरी डिप्लीटेड बांग्लादेश स्क्वाड एज़ वेल, जिसमें बहुत प्रॉब्लम चल रही है इन द वार्म अप। यार आप देखो, वो हो सकता है कि दे लॉस्ट वन ऑफ द गेम्स, बट yes, now they might not go all the way because Hasranga is not there, because he was their main weapon. I mean, I would believe that because वो बैटिंग से भी उनकी पावर्स कहीं ना कहीं नंबर 7 का प्रॉब्लम सॉल्व करता, नंबर नंबर 7-8 का, एंड बॉलिंग उनकी तो कोई लाजवाब थी ही, हुँ, स्पेशली इन दिस कंडीशन जहाँ पे उनको एक्सपीरियंस भी काफी हो चुका है अब। तो आई आई वुड से हसरंगा का मिस आउट होना माइट प्ले अ ह्यूज रोल इन नॉट नॉट मेकिंग इट ऑल द वे, but we cannot count out श्रीलंका। आई मीन blatantly लास्ट ईयर इवन 2019 में भी उन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था। दैट वाज मे बी या हम वन ऑफ कह देते, बट 2015 में भी वो एक टीम थी जिसने 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 इंग्लैंड को हराया था। 2019 में भी वो एक टीम थी जिसने इंग्लैंड या को हराया। तो श्रीलंका आर ऑलवेज वन साइड जो थोड़ा बहुत पंचेस तो देती है। फेयर इनफ या आई थिंक आई जस्ट फील कि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है फॉर द बिग गेम्स कंसिस्टेंटली, और आई थिंक दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम नॉट काउंटिंग ऑन श्रीलंका, अदरवाइज़ वो एंड दे मेरे डोंट हैव मलिंगा नाउ। या एंड दे डोंट हैव मलिंगा नाउ। Exactly, yeah. So that's Pakistan for you, Ronak. And next team जो हम discuss करेंगे, it's our home team यार. The host team India. What do you think of this squad? हम पता नहीं, हम we have already talked about it enough to be honest, but still हम discuss कर रहे हैं तो why not do it properly? What say? What do you think of this squad? What do I think? You are saying this? Oh, Ronak is saying that India is going to win the World Cup. Just replace this. I mean, I would not say replace, but I would add another poster with the likes of Virat Kohli, Rohit Sharma, Bumrah, and other players. I mean, 11 players ka baraz. Maybe Rohit Sharma lifting the cup and then other players around अरे him. नहीं नहीं, कोई So नहीं, that गेटवे पे एक और फोटो खिंचवा लेंगे, उसमें क्या है. so I would like to add that. I mean, दो हो गई है, एक बीच में और चाहिए, तो उसमें शायद वो आ जाएगा। Okay, fair enough. But yeah, overall decision of income. I think हमें तो पता था कि the way Ashwin was playing the first two games, he was going to be our pick instead of Akshar Patel. So other than that, it's the same squad. बाकी 14 नाम तो I think were pretty fixed. And what do you make of that decision? तेरे हिसाब से अश्विन को include करना right thing, or do you think Washington सुंदर को शायद लेके जाना चाहिए था? देखो देख, अगर अश्विन को खिलाया लास्ट दो ओडीआईज में, थर्ड ओडीआई में क्यों नहीं खिलाया, आई हैव नो आइडिया। मे बी बिकॉज ऑफ हीट एंड ऑल, दैट इज द अदर रीजन। बट अश्विन को अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं खिलाते तो आई वुडेंट हैव इवन आर्ग्यूड कि आपने क्यों वर्ल्ड कप में लिया या नहीं लिया। आई वुड हैव डेफिनेटली सेड कि आप मत लेते अश्विन को। Fair enough. अश्विन हैड नो चांस इन दिस वर्ल्ड कप एट ऑल। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी ही हैड नो चांस एट ऑल, but just because he played and he did well, he is a for sure shot in the 11। जैसा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले भी कहा था, वी डिड अ स्ट्रीम जहां पे वी वर फिगरिंग आउट कि इंडिया का प्लेइंग 15 क्या हो सकता है, आई वुड से स्क्वाड क्या हो सकता है 15 का। तो आई आई सेड कि मेरा डार्क हॉर्स एक है अश्विन, ही माइट कम इन एट सम पॉइंट इन टाइम। बट आई सेड दैट ऑन द बैक ऑफ कि एक महीने 2 महीने का टाइम था अपने पास, एंड वी हैड वेस्ट इंडीज सीरीज एंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज एंड एशिया कप इन लाइन। ये 3 सीरीज थी अपने पास टू जज जज हिम। बट जब एक बार वेस्ट इंडीज सीरीज में नहीं आया अश्विन, तो आई सेड नो चांस एट ऑल नाउ। जब वो एशिया कप में नहीं खेले तो आई सेड अब तो पक्का ही कोई चांस नहीं है उसका वर्ल्ड कप में आने का। बट ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आई मीन सरप्राइजिंगली लेके आए उनको, एंड आई मीन मे बी किसी का फायदा किसी का नुकसान। अक्षर पटेल गॉट इंजर्ड एट द रॉन्ग टाइम, वेरी रॉन्ग Yeah. टाइम, and that just gave Ashwin again a sigh of hope, and BCCI just say that ये chance मिला and फटाक से opportunity ले लो and just close the gates। तो Ashwin को लेके आए, and is a good addition, I would say he's a very good addition। But if you ask me, was he a right decision, I would say no। Is he a good is he a good addition? Yes, but was he good decision? No। पता नहीं यार, आई मीन काइंड ऑफ मैं तेरे से बहुत ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ आई जस्ट फेल्ट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ अश्विन का इंक्लूजन इन द टीम. वो वही वही मैं कह रहा हूँ।
I'm saying the same thing only. I'm saying, is he a good addition? Yes. Was he a good decision? No. Addition very good, decision very bad. मतलब वर्ल्ड कप से जस्ट एक सीरीज पहले टू इंक्लूड हिम इन योर मिक्स इज अ वेरी बैड डिसीजन, ओके, वेरी सो बैड यू आर जस्ट प्लानिंग. सेइंग, बट देन इट इज़ वो जो तूने वो पॉइंट रख दिया ना अक्षर पटेल वाला कि इफ अक्षर पटेल वाज़ नॉट गेटिंग इंजर्ड, अश्विन का नाम था भी नहीं स्क्वाड में. सो आई जस्ट फील इफ्स एंड बट्स वाला गेम है. बट या आई थिंक टू बी ऑनेस्ट रोहित शर्मा का वो स्टेटमेंट भी इट केम आउट व्हेन अक्षर पटेल गॉट इंजर्ड. ओके, कि यार अश्विन हैज़ ऑलवेज बीन इन आवर कंटेंशन. सो आई थिंक दैट प्रीटी मच एक्सप्लेन्ड कि ही वाज़ नॉट इन द But कंटेंशन. that was not the first time Rohit Sharma said that. Rohit Sharma said that again around Asia Cup के पहले का जब स्क्वाड डिक्लेयर हुआ था, एशिया कप का स्क्वाड जब डिक्लेयर हुआ था, he said don't count Ashwin out yet. किसी मीडिया पर्सन ने पूछा था that is it our final 15 for the World Cups as well, and are we not seeing Ashwin in the 11 or say 15? He said right now we cannot count anyone out, and not even Ashwin. फेयर इनफ, दैट या. टाइम, क्योंकि चहल को नहीं सिलेक्ट किया था, इसलिए दैट वाज द क्वेश्चन रेज्ड ओवर देयर. या. एंड दैट टाइम रोहित शर्मा क्लियरली सेड कि अभी हम किसी को काउंट आउट नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग. एंड मे बी ही वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस और पार्ट ऑफ द प्लान. ही वाज ऑलवेज इन कंटेंशन, बट थिंग्स जस्ट आई मीन हैपेंड एट द रॉन्ग टाइम और द राइट टाइम से फॉर इंडिया. ओके, फेयर इनफ. आयुष का जो क्वेश्चन है आई थिंक इट्स राइट टू टॉक अबाउट इट नाउ. तेरे प्लेइंग 11 में हु बैट्स एट नंबर 4? मेरा तो आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर, इट्स श्रेयस अय्यर. It is pretty clear. Yeah, Shreyas Iyer is the perfect number four for India, at least in Indian conditions. Not in just Indian conditions, but outside as well. But outside में क्या है? He has that one problem that is very evident. उनको short ball से problem थोड़ी बहुत होती है, and that was clearly evident in prior series. But अभी फिलहाल क्योंकि ये इंडिया में खेल रहे हैं, and the balls will नॉट बाउंस एज मच जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में. जो बॉल्स यहाँ पे आती हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो यहाँ पे रहेंगी, एंड दैट गिव्स श्रेयस अय्यर अ वेरी गुड एडवांटेज. एंड द अदर थिंग इज हिज रोटेशन ऑफ स्ट्राइक्स. जिस तरह से वो स्ट्राइक रोट करते हैं, खासतौर से मिडिल ओवर्स में, जहाँ पे आपको एक ऐसा बंदा चाहिए हु कैन इजिली रोटेट स्ट्राइक एंड नेगेट द प्रेशर, जो प्रेशर बिल्ड होगा शायद एक आध विकेट गिरने के बाद. तो ही इज माई गाय. ईशान किशन, जिसके लिए बहुत लोग डिबेट कर रहे हैं. आई मीन, आई डेफिनेटली वांट अ लेफ्ट हैंडर इन माय टॉप फोर फॉर श्योर. दैट इज अ वेरी गुड एडवांटेज टू हैव. बट इज ही दैट बिग एडवांटेज कि आप श्रेयस अय्यर को नंबर 4 से निकाल दे? आई वुड से नॉट. एग्जैक्टली. आई थिंक वही अगर ये होता ना कि यार एक जैसे जो नंबर श्रेयस अय्यर के एट नंबर 4 और जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है श्रेयस अय्यर को, अगर ईशान किशन को भी वो टाइम ड्यूरेशन मिलके वही सेम नंबर्स होते, देन आई वुड हैव इंक्लूडेड हिम, यस, बिकॉज रिसेंसी परफॉर्मेंस में ईशान किशन has done well. But yeah, I think from the start as well, and we are playing Australia यार, I think their lethal spinner, अगर हम जडेजा इसको ईशान किशन को डालते हैं, then Maxwell is bowling 10 overs. You never know when if you're including Shreyas Iyer, maybe Maxwell के overs हमें हटवाने like Australia won't be able to bowl them out because we have like pretty much right-handers in our mix. So, and Zampa isn't much a bigger turner of the ball. So I think I wouldn't mind Shreyas Iyer playing. So next question is मेरा उसी के around कि who plays the first game in between R Ashwin and Shardul Thakur at number 8? मतलब तेरा number 8 है कौन first game के लिए? We are playing in Chennai, yaar. I mean, Ashwin Yeah. walks in. For me, Ashwin walks in as of now. अगर किसी और वेन्यू पे रहता, I would have said शार्दुल ठाकुर, but because we are playing in Chennai and it is Australia, both plays well for Ashwin, because Ashwin has the most wickets against Australia for an Indian. That is one thing. He has a very good record recently as well against Australia. और फिलहाल पिछले 2 ओडीआई जो खेले उसमें भी काफ़ी परेशान किया उनके टॉप ऑर्डर बैटर्स को. आई मीन दैट ऑल दिस थिंग्स मिक्स अप एंड सेज. और अश्विन का होम ग्राउंड है चेन्नई. कम ऑन यार, आई मीन यू कैन नॉट डू दैट विद हिम कि उसको उसके होम ग्राउंड पे ना खिलाए. द पिच वेयर इट विल टर्न फॉर श्योर. आई मीन वहां पे अगर टर्न नहीं किया तो इंडिया में कहीं टर्न नहीं करेगा. दैट यू नो ऑफ फॉर श्योर. तो आई मीन इट डज. और वहां पे उस बंदे का बैटिंग भी काफी अच्छा है. आई मीन अगर ओवरऑल बैटिंग कहूँ तो मे बी शार्दुल ठाकुर माइट बैट बेटर देन अश्विन. बट एट चेपॉक एट चेन्नई स्टेडियम, आई वुड से Ashwin bowls well than Shardul. Ashwin fields better than Shardul. Ashwin bats better than Shardul. Ashwin does everything better than Shardul at Chennai at least. Yeah, fair enough.
Yeah, I think मेरे भी टीम में अश्विन है. So even you will go with three spinners in the first game, na, in Jadeja, Kuldeep and Ashwin. यस, यस, चेन्नई में कोई डाउट ही नहीं है. आई मीन, Yeah, इफ यू बैट फर्स्ट और बैट सेकंड, इट डजंट मैटर इन चेन्नई, बिकॉज चाहे आप बैटिंग फर्स्ट करे, बैटिंग सेकंड करे, बॉल स्पिन होने वाला है बॉस. आई मीन, यू हैव yeah. नो अदर ऑप्शन. वहां पे ऐसा नहीं कि आपको सर्दी पड़ने वाली है, वहां पे गर्मी ही रहेगी. 40 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. एंड यू विल हैव टू, आफ्टर आफ्टर टू 20-30 ओवर्स पिच इतना फट जाएगा कि आपकी स्पिन जो है स्क्वायर होने लगेगी. तो दैट इज गोइंग टू हैपन. और प्लस जो आईसीसी का रेस्ट्रिक्शन है 70 मीटर्स का बाउंड्री, दैट विल एड ऑन टू इट. आई मीन, देयर इज नो सेकंड थॉट्स. अगर कोई खिला रहा है शार्दुल को, आई मीन, आई एम नॉट अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर, आप नेक्स्ट मैच में उसको खिलाइए फॉर श्योर, आप जहां भी जिस भी वेन्यू में खेल रहे हैं. बट एट चेपॉक, एट चेन्नई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई मीन, देयर इज नो, दैट इज द नो ब्रेनर टू ब्रिंग अश्विन इन. आई थिंक मेरे हिसाब से टू पिचेस, एक लखनऊ की पिच और एक चेन्नई की पिच, आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि आप अश्विन को ना खिलाओ. आई थिंक अश्विन को खेलना पड़ेगा दोनों मैचेस इन एटलीस्ट दीज टू ही हैज टू प्ले. अक्सर आस्किंग विल सूर्य कुमार यादव गेट अ गेम, डिपेंड्स ऑन द इंजरीज. राइट नाउ इन द फर्स्ट 11 आई थिंक ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड. एंड अगर हम अगले मैच में वी वांट टू गो इन विद 5 बॉलर्स, हम कोई भी मैच में अगर 5 बॉलर्स के हिसाब से जाना चाहते हैं, मे बी लाइक नेदरलैंड्स जहाँ पे हम चांस देना चाहते हैं टू फॉर आवर बैटर्स, then you could see maybe like a Surya Kumar Yadav as an extra batter. And then but the only problem is वो टाइम पे हमें हार्दिक से 5-10 ओवर करवाने पड़ेंगे, which I don't think is worth taking a risk. आई मीन, वन ऑफ मैच में आप सोच सकते हैं वैसा, बट Yeah, आई मीन, आपको 9 ओडीआईज खेलने हैं exactly. मिनिमम. आई मीन, इफ यू गो द डिस्टेंस, अदरवाइज 11 मैच हो जाएंगे. बट Yeah, मिनिमम 9 मैचेस हैं. दैट 9 मैच में यू विल हैव टू बी वेरी वेरी अबाउट योर प्लेयर्स, स्पेशली लाइक हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह. यू नीड टू गिव देम सम ब्रीदर फॉर श्योर, कि आप true. उनको थोड़ा सा संभाल के रखें. वरना आई मीन, इफ दे ब्रेक डाउन at a very crucial juncture at during ninth or eighth game, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. Yeah, I hear you. Yeah, I think मेरे अभी एकदम pretty much I agree to the views, and it's a no-brainer. यार, I think it's pretty clear that we have a I think settled squad now, which I think it's a big positive, because at one point I still did not have any idea कि हम कौन से प्लेयर को अचानक से ले आएंगे. एंड जैसे कि होता है कि हर साल हर वर्ल्ड कप के पहले एक नाम आता ही है. वंस अगेन इट्स रवि अश्विन फॉर टीम इंडिया. T20 वर्ल्ड कप में भी अश्विन का नाम दोबारा अगेन वंस अगेन इट इज द 50 ओवर वर्ल्ड कप. बट आई एम हैप्पी इस बार आया because we are playing at home, and Ashwin looks good, to be honest. Looked good in the first 2 games against Australia as well. So I think hopefully जो अक्षत का सवाल है ये ODI वर्ल्ड कप में हम एंड कर लें इस सवाल को, that India will they end their ICC trophy drought this season. वक्त ही बताएगा. एंड बट होपफुली वक्त अच्छे से बताए कि यार हाँ एंड हो गया. बट या अदर देन दैट रियली एक्साइटेड But फॉर I have, वॉट. I have, I have one thing to say. बोलना. Whether we win it or not, I want to see India dominate matches. नहीं, That नहीं, is विनर भी one विन of से फ़र्क my. नहीं पड़ता भाई. मेरे को क्रिकेट को रियल विनर बनाना ही नहीं है. मेरे को वर्ल्ड कप चाहिए. नॉट नॉट मैं क्रिकेट रियल विनर तो तब बनेगा ना जब क्लोज मैचेस होंगे. आई वांट टू सी इंडिया डोमिनेट दोज बांग्लादेश टीम, श्रीलंकन टीम, आई मीन अफगानिस्तान टीम. वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक रन से जीत रहे या ड्रॉ कर रहे हैं, वो वाले मैचेस मेरे को नहीं चाहिए इस वर्ल्ड कप में. आई मीन, यू प्ले गुड मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो चलेगा. आई मीन, बट द वे टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एटलीस्ट, आप मतलब see, for sure, I want from the bottom of my heart कि India World Cup जीते for sure. But I also want to see how India plays this World Cup, because that will set the tone how we go forward. It is not आई just एम about. आई एम जस्ट हैप्पी दैट वी आर प्लेइंग पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया रियली क्विकली. क्योंकि Yeah. वो वो सब जो एंड के जो फिक्चर्स है ना, आई थिंक इफ यू आर प्लेइंग दीज टीम्स वेरी लेट इन द टूर्नामेंट, वो टाइम पे थोड़ा अलग ही नर्वसनेस या स्ट्रेस लेवल बढ़ा देते हैं. बट राइट नाउ हु डू वी प्ले लाइक आवर लास्ट 2-3 गेम्स? The last 2-3 games we play. Just a second, I'll bring out the schedule for India. Whom do we play? The series. The first game is, of course, I mean, Australia खेल रहे हैं. Second game is against Afghanistan. Third game is against Pakistan. On 14th, 19th, we have Bangladesh. 22nd October, we have New Zealand. 29th October, we have England. That one big match is
एट द वेरी एंड इज इंग्लैंड एट 29th October. उसके बाद फिर श्रीलंका on 2nd November. South Africa 5th November is a very big match again. The last match, inconsequential match maybe, is नेदरलैंड्स। India versus Netherlands at 12th November. हाँ, वो तो आई थिंक दिवाली के दिन पे रखा था कुछ तो ऐसा मेरे को, मतलब मैंने कहीं तो पढ़ा था बट आई डोंट नो। Yeah. बट या आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड वर्ल्ड कप यार रौनक। आई थिंक वी आर जस्ट लेस देन बट 72 आवर्स यहाँ अवे। पे एक चीज और है कि वी माइट नॉट नो इफ इंडिया क्वालिफाइज और नॉट टिल द वेरी लास्ट और सेकंड लास्ट मैच, या बिकॉज बहुत टैक्टिकली प्लेस किया है. आफ्टर एवरी गुड मैच वी हैव comparatively smaller team to face. For example, after Pakistan, we are facing Bangladesh. After New Zealand and England, we are facing Sri Lanka. After South Africa, we are facing Netherlands. So ऐसे मतलब स्पेस आउट किया है बड़े बड़े टीम्स को. आई कैन सी दैट या। बट या कंटेंडर्स तूने तो बता दिया कि दे आर द वर्ल्ड कप कंटेंडर्स फॉर श्योर। आई थिंक आई वुड रेट इंडिया एंड इंग्लैंड एज माय टॉप टू एज वेल। होपफुली दिस टाइम वी गो ऑल द वे थ्रू, बिकॉज बहुत हो गया यार अभी हम बहुत कुछ ज्यादा ही हद से बड़े होते जा रहे हैं। हम बच्चे थे जब भी हमने अच्छी खासी ट्रॉफी उठाई थी, बट हम बहुत ज्यादा ही बड़े हो गए अभी राइट नाउ। सो वी वांट दैट ड्राउट टू एंड, एंड या होपफुली दिस वर्ल्ड कप, होम वर्ल्ड कप ब्रिंग्स इट फॉर अस। और होम वर्ल्ड कप का एक एडवांटेज वो लगता है, मतलब एक वो देता है क्या, सेटिस्फेक्शन देता है कि यार हाँ अपने घर पे हो रहा था, हम मोस्टली जीत ही जाएंगे, बिकॉज लास्ट थ्री वर्ल्ड कप्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग हैज बीन वन बाय द होम टीम। सो या दैट इज वन गुड स्टैट टू हैव। Yes, absolutely. That is one good start to have, or especially favoring your lucks. जो आप कहते हैं कि अपने चेयर से मत उठना, पूरा मैच देखते वक्त नींबू मिर्ची लगा के रखो, वो सब सब काम करते हैं टोटके. एंड दिस माइट ऑल्सो बी वन ऑफ देम कि लास्ट तीन जो है होस्ट नेशंस जीते हैं. तो होपफुली एंड नॉट लास्ट तीन, इफ यू से लास्ट तीन फर्स्ट टाइम होस्ट इंडिया जीती, फिर उसके बाद इंग्लैंड, एंड ऑल्सो or every time they were ranked number one. England was sorry, Hmm. Australia was ranked number one when they won the World Cup. Went into the World Cup. England they were number one ODI team when they entered into the World Cup, and India is also number one ODI team when they are Yeah, entering into the World Cup. true. So a lot of stars are aligning. Hopefully, the stars align and make a Dhruv Tara to make India reach all the way. Let's see how it happens. But as of now, yes, that is what we are expecting for us. At least the top, for me, at least the top four as of now, as I said, are India, England, Australia, and either of Pakistan or South Africa. अभिनव का साउथ अफ्रीका की जगह न्यूजीलैंड है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. Yeah. आपका कौन सा बताइए कमेंट्स में अभी, या फिर जब बाद में देखेंगे तब. या फेयर इनफ एंड दैट सेड, इतना ही है हमारे पास आज के स्ट्रीम में टू डिस्कस दीज थ्री टीम्स। विल बी बैक विद अनदर थ्री और फोर टीम्स टुमारो। सो एवरीवन जो अभी देख रहे हैं स्ट्रीम, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। जो बाद में देखने वाले हैं, डू द नीडफुल एज वेल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नो जब भी हम लोग लाइव आ रहे हैं, वेन एवर वी आर पुटिंग आउट अ वीडियो। बहुत ही जल्दी हम एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो रिवील करने वाले हैं, जिसका आई थिंक वी वुड वांट यू गाइस टू बी अ पार्ट ऑफ। It's called the all-time World Cup 11. So keep an eye on that. Hit the bell icon, like the video, support the channel, and become a part of the Third Man family. Ronak, thank you so much for joining me. And tomorrow, I think you'll be streaming once again, discussing other two, three, four teams, if I'm not wrong. So Yes. join Ronak tomorrow night around same time for that stream as well. So till then, have a good night. Take care.